evening, viewers. You're now watching Hornbill TV. At least 3 minor children were injured in an explosion involving a suspected mortar bomb near the Palal area bordering Tengnoupal district at around 1:30 p.m. local time on Saturday, sources said. Following the incident, security forces rushed to the spot and secured the area. The injured children were immediately shifted to the 26 AR sector headquarters for medical treatment, and sources said that army doctors were attending to the injured and their condition are reported to be out of danger. Further details are awaited. $250 packets containing 200 pieces, each totaling 50,000 in all illegally smuggled Burmese cigarettes, were seized from a vehicle at Gumra along Assam to Meghalaya border on Friday evening. 2 individuals were arrested by the police at the Digorkhal check gate in this connection. Mohammed Sajid Ahmed and Idris Ali, both residents of Golpara district of Assam, were apprehended. According to reports, Gumra police, acting on a tip-off, stopped a vehicle after it reached the Digorkhal police checkpoint about 40 km from Silchar on Friday and searched it thoroughly. The cigarettes were seized by the police in presence of witnesses, informed Additional SP Pradeep Konwar on Saturday evening, and added the value of the seized goods would be worth ₹10 lakh. আপোনালোকে জানে আমাৰ এসএসপি ছাৰৰ আন্ডাৰত অলৰেডি ডিস্ট্ৰিক্টত আমি ড্ৰাগছ বা তেনেকুৱা টবাকো এইবিলাকৰ ওপৰত আমি একশন লৈ আছো। সেই সূত্ৰে আমাৰ ইনপুট আছিলে যে গাড়ী এটা আহি আছে আৰু সেইমতে আমি যেটো দিগৰখাল গুমৰা পোষ্টৰ আন্ডাৰত তো দিগৰখালত আমি গাড়ীখন মানে ইন্টাৰসেপ্ট কৰি ধৰা হ'ল। তাৰ পৰা আমি অলপ সিগাৰেট পালো, বাৰ্মি সিগাৰেট। গাড়ীখন যিখন আমি ধৰিছো তাৰ নাম্বাৰটো হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ MH46BM4236 আৰু গাড়ীখন যেতিয়া আমি চেক কৰিলো, চেক কৰোতে আমি 250 পেকেট বাৰ্মি সিগাৰেট পালো আৰু প্ৰত্যেক এটা পেকত আমাৰ 250 পিস কৈ মানে সিগাৰেট আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দুজন মানুহ বৰ্তমান এপ্ৰিহেন্ড কৰি থৈছো, সাজিদ আহমেদ আৰু ইদ্ৰিছ আলী। তেওঁলোকক খুটপুছ কৰি থকা হৈছে। তো খুটপুছ কৰি আমি বাকি ইনফৰমেশন কিবা যদি পাওঁ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি পিছত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা। দুইজনৰ ঘৰ গোৱালপাৰা ডিস্ট্ৰিক্ট। ভ্যালু আপোনাৰ এটো আমাৰ সিগাৰেট 50,000 পাৰ সিগাৰেট 20 rupees, গতিকে 10 lakhs approximately. In a protest against the ongoing barbaric attacks and brutal killings of minority Hindus in Bangladesh, a demonstration program was organized in Silchar on the initiative of the BJP's Yuva Morcha on Saturday. As part of this program, an effigy of Muhammad Yunus, the current chief advisor of Bangladesh, was burnt on behalf of the organization. On this day, the Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM members took out a protest march from the Silchar district BJP office. Later, the march assembled in front of the Martyr and freedom fighter Khudiram Bose statue. There, the protesters expressed their anger and protest by burning the effigy of Muhammad Yunus, and the speakers alleged that despite the continuous atrocities on minority Hindus in Bangladesh, the concerned administration is maintaining a silent rule, which is extremely alarming and condemnable. আজকে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি এবং কুশপুত্তলিকা আমরা এখানে দাহ করেছি। আমরা সবাই জানি যে বিগত 2 দিন আগে বাংলাদেশে যেভাবে মৌলবাদী সরকারের বিচারধারায় পুষ্ট মৌলবাদী এবং কট্টর ইসলামপন্থীরা যারা যেভাবে আমাদের হিন্দু এক ভাই দীপু দাসকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে ইসলামিক যে বিচারধারার বা ইসলামিক যে আদর্শে ওকে মেরেছে, ওকে আত্মরা করে ওকে ফাঁসি দিয়েছে এবং ফাঁসি দেওয়ার পর ওকে আত্মরা অবস্থায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা শুধু বর্তমানে বাংলাদেশের একটা বা দুটা ঘটনা না, আজকে দীর্ঘ বছর থেকে বাংলাদেশে এভাবে হিন্দু নিধনযজ্ঞ চলছে। এবং শুধু হিন্দু না, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন যারাই আছে, মাইনরিটিতে যারাই আছেন, সবাইকে কিন্তু এভাবে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করছে ওরা। সেই মৌলবাদী সরকার, সেই মৌলবাদী বিচারধারার যে মানসিকতার মানুষগুলো আছে সেখানে,
সেখানে ওদের ঘর বাড়ি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মহিলাদের রেপ করা হচ্ছে এবং রেপ করে ওদেরকে লাশ পর্যন্ত গায়েব করে দেওয়া হচ্ছে। এবং তারই প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা এখানে আজকের ধর্ণা প্রদর্শন করলাম। এই কট্টরতার কট্টরতা যেভাবে আজকের দিনে সমগ্র অঞ্চলে, সমস্ত অঞ্চলে যেভাবে স্প্রেড হচ্ছে, তা কিন্তু আমাদের মুসলিম সমাজের যারা স্কলাররা আছেন, মৌলবাদীরা যারা আছেন, মুল্লারা যারা আছেন, তাদেরকে কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদেরকে সেই কট্টরতার বিরুদ্ধে কিন্তু ওরা ফতোয়া জারি করা, ওদের ইসলামিক শিক্ষার মধ্যে কিছুটা হলে কিন্তু সেই যে কট্টরতাকে শেষ করার যে বিষয়গুলো, সেটা কিন্তু সংযোজন করতে হবে। আজকে মোহাম্মদ ইউনিসের আমরা কুশপুতলিকা দাহ করেছি, কারণ সেই ইসলামিক যে কট্টরতা উনি সরকারে আসার পর সেটাকে বাড়াবা দিয়েছেন, সেটাকে বাড়িয়েছেন। ভারত সরকারের কাছে আমাদের যুব মোর্চা কাছাড় জেলার পক্ষ থেকে আবেদন এটাই থাকবে, আমাদের যে হিন্দু যে নিধনযজ্ঞ চলছে, আমাদের যে মাইনরিটি বাংলাদেশে যে নিধন করা হচ্ছে, মারা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যেন সরকার খুব শীঘ্রই পদক্ষেপ নেয় এবং তা যাতে খুবই তাড়াতাড়ি সেটা যেন আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট আছে বা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যে ফোরাম আছে, সেখানে যেন সেটা উত্থাপিত। The Bharatiya Janata Party won 14 of total 20 Itanagar Municipal Corporation wards in IMC election, of which the result was announced on Saturday. The People's Party of Arunachal won the Pasighat Municipal Council elections, winning 5 of 8 wards, while the opposition Congress failed to win a single seat in both the Itanagar and Pasighat civic bodies. The Nationalist Congress Party won 3 seats. The Lok Janshakti Party Ram Vilas secured 2 and an independent won 1 seat. 4 BJP candidates were earlier elected unopposed to INC. म्यूनसिपल इलेक्शन बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन अभी हमारा काउंटिंग संपन्न हो गया और ऑल रिजल्ट्स सर्टिफिकेट्स वगैरह हमारा रेस्पेक्टिव रिटर्निंग ऑफिसर्स एमओआरओ लोग दे दिए और अभी तक बहुत ही पीसफुल हुआ और कोई किसी की तरफ से कंप्लेन वगैरह अभी नहीं आया, बिकॉज ईवीएम ही है, तो ईवीएम में तो कोई कंप्लेन करने का कोई ये नहीं है। प्लस उसमें ईडीसी का बोर्ड्स भी था, दैट इज ऑल्सो ऑल इंटेलेक्चुअल बोर्ड्स, कि उसमें हमारा जो इलेक्शन ड्यूटी में जो एम्प्लॉयड है वो लोग ही वोटिंग किया, उसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कौन सा पार्टी का जीता? सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपका इंक्लूडिंग अनकंटेस्ट अभी बीजेपी, आउट ऑफ 20 वर्ड्स से 14 बीजेपी, 3 एनसीपी, 2 एलजीपी एंड 1 इंडिपेंडेंट। तो सर कोई एप्रीहेंशन है कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो, क्योंकि काफी लोग कोई हारते हैं कोई जीतते हैं? अभी तक तो कोई एप्रीहेंशन तो नहीं है, बट आई हैव ऑलरेडी directed my SP, both the SPs of Itanagar and Naharlagan. The security के लिए कोई इशू नहीं है, they are already in the field. कोई apprehension अभी तक आया नहीं है। सर आपकी तरफ से क्या मैसेज आएगा, क्योंकि कई कैंडिडेट हारते हैं, कभी जीत, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो काफ़ी लोग दुख में होते हैं। हाँ, इलेक्शन ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि एवरी आफ्टर 5 years वी विल हैव टू गो फॉर इलेक्शन, तो उसमें हार जीत होता है, तो मायूस नहीं होना है। It's never better let than never, तो इसको नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम के लिए आप रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का एक डेमोक्रेसी में ये चलता है, और आप जब इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो आपको मालूम होना है कि इसमें हार और जीत होता है, तो इसलिए कोई मायूस नहीं होना चाहिए। बट आई हैव सीन दोज कैंडिडेट्स हु लॉस्ट द इलेक्शन, हमने देखा है वो लोग भी दे हैव कंसीडर्ड देयर डिफीट एंड अच्छा से ये लोग बात करके चला गया। आई होप इसमें कोई इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ सर, न्यू सिविक बॉडी ईटानगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा, न्यू मेयर होगा, तो आप किस प्रकार सर साफ सफाई को लेके आप मॉनिटर करेंगे, क्योंकि काफी एलिगेशंस लगे पहले आईएमसी में? पहले तो उसको पहले मेयर तो बनने दीजिए, उसके बाद विल डिस्कस, विल कोऑर्डिनेट विद द न्यू बॉडीज एंड विल वर्क आउट कोऑर्डिनेशन हम लोग काम करेंगे, और विल ट्राई द म्यूनसिपल ईटानगर का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा से चले। A knife-wielding attacker went on a rampage in central Taipei on December 19th, killing 3 people and injuring several others. He later fell from a building and died while being chased by the police.
According to a visual, the attacker first let off smoke bombs at Taipei's main train station, then ran to a nearby subway station in a busy shopping district, attacking people on the way. President Lai Ching-te later said the suspected attacker had a prior criminal record and outstanding warrants, and that his house had been searched. The suspect had been identified only by his last name, Chang. We'll now take a short break. Stay tuned. on the rise, सुले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi on Saturday made an official statement over replacing of Manrega by the Modi government and said the act was passed 20 years ago in Parliament with consensus to give legal rights to the poor. However, the Modi government has tried to weaken the interests of the poor and ran a bulldozer over the act. भाई और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए
संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। The Special Court of the Federal Investigation Agency on Saturday has sentenced former Pakistan Prime Minister and Pakistan Tehreek-e-Insaf founder Imran Khan and his wife Bushra Bibi to 17 years of imprisonment in the Toshakhana 2 case. The sentences mention that the old age of Imran Khan, along with the fact that Bushra Bibi is female, has resulted in lenient and lesser punishment, Dawn reported, citing from the court's order copy. Both of them were fined rupees 16.4 million, and according to the law, a failure to pay the fines will result in additional jail time. According to Dawn, the case involves the purchase of an expensive Bulgari jewelry set which was gifted to Imran by the Saudi Crown Prince during an official visit in May 2021 at a throwaway price. It further reported that the verdict was delivered by Special Judge Central Shahrukh Arjumand during a hearing held at Rawalpindi's Adiala jail, where Imran is imprisoned. After the verdict, Imran and Bushra's legal teams indicated their intention to challenge the decision before the High Court. We'll take a quick break. Stay tuned. माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार डबल इंजन सरकार।
Welcome back. External Affairs Minister S. Jaishankar on Saturday highlighted how Indian talent and skill set have played a pivotal role in shaping the national brand of the country. As with increasing globalization, Indian talent has met demands worldwide. He made the remarks at the 22nd convocation of the Symbiosis International deemed university in Pune. Speaking to graduating students, EAM shared how in his conversations abroad there has been praise for the diaspora. Jaishankar highlighted that with the rebalancing of the world's perception of India, quoted, very much more positively and very much more seriously than before. The reasons for that are that both national brand and individual reputation have improved considerably. What has happened is that after decolonization, many nations were able to progress and prosper because they now control their own destinies. Now, this has not happened automatically. The quality of choices and the wisdom of policy has made a crucial difference. In India's own case, we have seen how leadership and governance has led to ups and downs in various phases in our economic growth and in our social transformation. The nation that has gained the most in this era is China. But we ourselves have done well, especially in the post-reform era. And I would say even more in the last decade. There would be some others in the emerging markets category about whom the same can be said. In contrast, much of the Western world now feels that they have stagnated, a sentiment that has increasingly come to acquire a political meaning. There are many reasons for that sentiment. Western elites consciously chose to shift production to maximize profits. Their competitiveness has eroded over the years, accelerated by their lifestyle. The demographic predicament has been an added factor. But the cumulative result of all these happenings is that the global economic and thereafter political pecking order has actually undergone a very significant change. This rebalancing is not only a reflection of relative power, it is also one of the attitude that people have to each other and to the world. As one of the notable examples of rising in the international order power structure, the unfolding attitude and intent of India towards the world merits reflection. How does the world perceive us currently? The short answer is very much more positively and very much more seriously than before. And the reasons for that is both our national brand and our individual reputations, which have improved considerably. We are regarded today by the world as people with a strong work ethic, with an aptitude for technology, who espouse a family-centric culture. In conversations abroad, my point is that we have started to surge in trained human resources at the very time when many developed nations are struggling to find them. Since demand and supply invariably develop their own equation, we have entered an era of mobility. A global workforce is in the making. In my own travels abroad, I increasingly encounter more Indian aircrew, more Indian hotel staff and managers, more Indian medical personnel, professionals and entrepreneurs. This has two important implications for us as a government. One, we need to ensure the welfare, including in conflict situations. And two, that the politics of this mobility needs to be managed. By doubling down on Make in India, more of our products can make their mark beyond our shores. This is over and above
meeting our own needs. Add to that design in India, research in India, innovate in India, or deliver from India. And the same holds true for services as well. Conversely, we will remain a mere market for others if we are less than successful in our efforts. Obviously, all this is easier said than done, and we have to upgrade our infrastructure, we have to develop our human resources, we must adopt and pursue right policies. But more importantly, it requires vision, it requires leadership, and it requires execution, all of which we fortunately have today. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.